Hello everyone, in this video we will be revising with the help of flashcards and some important sheets. So first of all we will be learning about the cardiorenal syndrome. So cardiorenal syndrome, what basically happens in cardiorenal syndrome, there is acute heart failure. Acute heart failure in case of acute kidney injury, chronic heart failure in case of progressive chronic kidney disease, there is acute kidney injury in case of acute cardiac dysfunction, and there is chronic kidney disease in case chronic kidney disease causes cardiovascular disease, and some systemic disease cause both cardiac and renal dysfunction like your diabetes, sepsis and amyloidosis. So there are 5 classifications of your cardiorenal syndrome. There is acute cardiorenal syndrome. What happens in acute cardiorenal syndrome? Due to heart failure, there is acute kidney injury. Now what is chronic cardiorenal syndrome? In case of chronic cardiorenal syndrome, there is chronic heart failure that leads to your chronic kidney disease. Now acute renocardiac syndrome में क्या होता है? acute kidney injury की वजह से तुम्हारा acute heart failure हो जाता है. Renocardiac is opposite, and cardiorenal मतलब due to heart failure there is kidney injury. Acute renocardiac is basically your acute kidney injury causing acute heart failure. Chronic renocardiac is CKD causing chronic heart failure, and we have some secondary cardiorenal syndromes. Now cardiorenal syndromes का management हम basically कैसे करते हैं? We use diuretics. अगर fluid overload होगा, like furosemide is a loop diuretic and will cause renal impairment. Diuretics usually cause renal impairment, so diuretics should be considered carefully while you are giving medications for cardiorenal syndrome. So diuretics like your furosemide is used. ACE inhibitor and ARPs like your perindropil and irbesartan can be used. These are nephrotoxic and cause vasodilation of the efferent arteriole in the glomerulus, and we have IV vasodilators like your hydralazine can be used for cardiorenal syndrome. Then inotropic drugs in the cardiogenic shock like your dobutamine can be used, and ultrafiltration method can be used acute decompensated heart failure में और diuretic resistance में. Now cardiorenal syndrome में जब acute heart failure होता है, acute heart failure के various mechanisms होते हैं. Acute heart failure leads to AKI via various mechanisms like कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है जब अक्यूट हार्ट फेलियर होता है. तो क्या होता है कि किडनी में ब्लड कम पहुंचता है, रिड्यूस किडनी परफ्यूजन, एंड दैट लीड्स टू AKI. देन रेनिन रिलीज इज देयर जब किडनी का परफ्यूजन कम हो जाता है और रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. अब रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन H2O रिटेंशन, ज़्यादा वाटर रिटेन होने लगेगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा रास एक्टिवेशन की वजह से. फर्दर तुम्हारा किडनी परफ्यूजन will be reduced and that will result in AKI. Now right heart failure में तुम्हारा central venous pressure बढ़ जाता है and there is increased in renal vein pressure that can lead to AKI. Now talking about granulomatosis with polyangiitis. Granulomatosis with polyangiitis में there are some investigations. Before that granulomatosis with polyangiitis जो है वो ANCA associated vasculitis है. ANCA associated vasculitis है. There are 2 types of ANCA antibodies, P-ANCA एंड C-ANCA. P-ANCA वाली पेरीन्यूक्लियर होती है, C-ANCA वाली साइटोप्लाज्मिक होती है. नाउ P-ANCA इज डायरेक्टेड अगेंस्ट माइलोपेरोक्सिडेज एंड C-ANCA इज डायरेक्टेड अगेंस्ट प्रोटीनेज 3. ठीक है, P-ANCA जो है वो माइलोपेरोक्सिडेज के अगेंस्ट होती है एंड C-ANCA तुम्हारी प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट होती है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी दिस फिगर. C-ANCA, this is the C-ANCA antibodies against the proteinase 3, and these are the neutrophils and these are the proteinase 3, and there is myeloperoxidase. P-ANCA antibodies are against the myeloperoxidase. Okay, now okay, so basically these your proteinase 3 and myeloperoxidase, they play a role in hyperactivation of the primed neutrophils, leading to vessel endothelium inflammation and damage. So that is what is happening in granulomatosis with polyangiitis. Now there are some investigations in granulomatosis with polyangiitis. You do FBC, you do EUC and you do CRP and your ESR, and ANCA का टेस्ट करते हैं
एंका टाइटर डज नॉट कोरिलेट विद द डिजीज एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एंका एंटीबॉडीज़ होंगी तो उतना ज़्यादा सीरियस डिजीज़ होगी। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो इंक्लूड योर यूरिनरी कास्ट चेक करेंगे, चेस्ट एक्सरे और CT चेस्ट कराएंगे। सो लुक एट दिस चेस्ट एक्सरे. This is a chest x-ray in case of your granulomatosis with polyangiitis, तुम्हें pulmonary nodules मिलेंगे. और this one is your pulmonary nodules seen in case of your it is seen in case of granulomatosis with polyangiitis. Now granulomatosis with polyangiitis में हम स्किन बायोप्सी भी कराते हैं और रीनल बायोप्सी भी कराते हैं. दिस इज बेसिकली ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस दैट इज हैपनिंग इन योर leukocytoclastic vasculitis happening in your granulomatosis with polyangiitis. मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम स्टीरॉइड्स देते हैं इंडक्शन फेज में, स्टीरॉइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, रिटुक्सीमैब देते हैं, और मेंटेनेंस फेज में हम पेशेंट को एज अ थायोप्रिन, माइकोफेनोनेट एंड रिटुक्सीमैब देते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज granulomatosis with polyangiitis. And next thing you need to know about granulomatosis with polyangiitis इट्स अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. यूजली ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलियंजाइटिस के पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? फीवर होता है, आर्थ्रेल्जिया होता है, कफ होता है, वेट लॉस होता है, आइज में डैक्रोसिस्टाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस इज देयर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैरानेजल साइनोसाइटिस, सैडल नोज डिफॉर्मिटी इज देयर क्योंकि नेजल सेप्टल परफोरेशन हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, हीमोप्टेसिस हो जाता है, रीनल ट्रैक्ट में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज देयर, रीनल इम्पेयरमेंट एंड हीमेटोरिया इज देयर. सो दैट वाज अबाउट granulomatosis with polyangiitis. I hope this concept about granulomatosis with polyangiitis is clear. Another important thing is pyriformis syndrome. Pyriformis syndrome is basically caused by the irritation or compression of the sciatic nerve. You can see the sciatic nerve है, सियाटिक नर्व जब पायरिफॉर्मिस मसल से कंप्रेस हो रही है, सो देयर इज पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम. एंड पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में यू कैन सी दिस सियाटिक नर्व एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द सेक्रम, साइटिक नॉच एंड सेक्रोट्यूबरस ligament. Sorry, this is about the pyriformis muscle that is originating from your sacrum. It is originating from the sciatic notch as well as the sacrotuberous ligament, and it attaches to the greater trochanter. That is important thing. Pyriformis muscle is very very important. You should know the origin as well as the insertion. Now this is the sciatic nerve. You can see it is getting compressed under the pyriformis muscle, and pyriformis syndrome is going to occur. What are the clinical examination? How do we do in case of pyriformis syndrome? We do a pinpoint tenderness is there at the upper middle gluteus, then straight leg test करते हैं, straight leg test will come positive in this case, and then we do Fair maneuver, that is positive. We do flexion, adduction, internal rotation of the patient, so that will be positive. And straight leg test negative is this one, usually positive with lumbosacral pathology. So this is the straight leg test. Now remember about we are done with this. So here I have some important mnemonics for you people, and we will be learning first about the eclampsia. What is eclampsia? Eclampsia is basically seizure in women with preeclampsia. Okay, so there is seizure in women with preeclampsia, hypertension on 2 separate readings, and there is proteinuria also. Okay, what is preeclampsia? Preeclampsia is basically hypertension on 2 separate readings, and proteinuria is also there, and eclampsia is seizure in a women with preeclampsia. And also there is HELLP syndrome. What is HELLP syndrome? HELLP syndrome का mnemonics है hemolysis, elevated liver enzymes, then we have low platelets. This is the mnemonic for HELLP syndrome. Now tocolytics. Okay, टोकोलाइटिक्स के लिए जो निमोनिक है, टू रिमेंबर द टोकोलाइटिक्स, दैट इज़ इट्स नॉट माई टाइम. दैट इज़ टोकोलाइटिक्स आर बेसिकली गिवन फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस. मतलब अभी हमने बेबी को डिलीवर नहीं करवाना है तो हम टोकोलाइटिक्स देंगे. एंड टोकोलाइटिक्स बेसिकली उसको याद करने का तरीका है इट्स नॉट माई टाइम, दैट इज़ इंडोमिथासिन, nifedipine, that is calcium channel blocker, magnesium sulfate and terbutaline. These are the tocolytics, that is indomethacin, nifedipine, magnesium sulfate and terbutaline. Now terbutaline is actually your adrenergic agonist. Then we have fetal heart tones. Let's learn about the fetal heart tones. Okay, so fetal heart tones याद रखने के लिए remember variable deceleration is seen in case of cord compression. So
what you will do, move the mom's position in this case when cord is getting compressed. So variable deceleration will be seen in the fetal heart rate, and what is the thing you are going to do, you will move the mom's position. Now early deceleration is seen in head compression, and intervention is not necessary. Acceleration is seen and accelerations are okay, that is normal, no intervention is needed. Late deceleration are seen when there is placental insufficiency and emergency delivery is done in this case. Okay, तो ये हो गई तुम्हारी fetal heart tones. Okay, how you will remember wheel chop mine. Okay, wheel chop mine, this is the mnemonic to remember the fetal heart tones. Now obstetric emergencies, how do we memorize the obstetric emergencies? There is postpartum hemorrhage, there is placental abruption and there is placenta previa. So postpartum hemorrhage याद रखो. Postpartum hemorrhage में more than 500 ml of blood loss is there in the vaginal birth, more than 1000 ml of blood loss is there in the cesarean birth, and the causes of postpartum hemorrhage are remembered by 4 T's, that is stone, trauma, tissue, thrombin. Okay, and postpartum hemorrhage में देखो तुम्हारा जो hematocrit है वो तुम्हारा less than 10% से fall हो, more than 10% से fall हो hematocrit. And there is postpartum hemorrhage में heart rate you will see, then oxygen saturation, restless हो जाएगी female, cool and clammy female will be there. Now placental abruption में you have to remember कि जो abdomen हो जाएगा placental abruption में, that will become hard and painful abdomen. Dark vaginal bleeding निकलेगी and extended fundal height will be there. Dark vaginal bleeding with extended fundal height, and the baby will be extremely distressed and there will be decreased fetal movement. Baby will be extremely distressed and there will be decreased fetal movement. Then we have placenta previa. Placenta previa is basically painless kind of condition. It is the uterus is non-tender and there is bright red color of bleeding and episodic bleeding is there. Bright red color की bleeding होगी in case of placenta previa and episodic bleeding होगी. Okay. Now next thing you have to remember the stages of labor. We have different stages, that is stage 1. Stage 1, it begins with regular contraction, ends with fully dilated cervix. Okay, so stage 1 में goal is cervical dilatation from 0 to 10 centimeter plus 100% effacement should be achieved जब तुम्हारा stage 1 होगा. तो stage 1 शुरू होता है regular contraction से और ख़त्म होता है जब तुम्हारा fully dilate हो जाए cervix. Then stage 2 जो है that begins when mom is fully dilated, cervix is fully dilated, वहाँ से start होता है and end होता है with delivery of the baby. Stage 3 तुम्हारा चालू होता है from full delivery of the baby and ends with full delivery of the placenta, and stage 4 is the first 4 hours after birth of placenta. मॉम बेबी टाइम वो होता है बेसिकली. ओके, सो द स्टेज थ्री जो है दैट इज़ प्लेसेंटा को डिलीवर होने के लिए शुड नॉट बी लॉन्गर देन 30 मिनट, क्योंकि अगर 30 मिनट से ज़्यादा होने लग गया ये प्लेसेंटा का डिलीवरी तो दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स पोस्टपार्टम हेमरेज. नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ईकेजी चेंजेस. सो हाइपोकलीमिया देखो, हाइपोकलीमिया में बेसिकली यू गेट डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट. हाइपोकलीमिया में जो एसटी सेगमेंट होता है द सेगमेंट गेट्स डिप्रेस्ड, वी गेट इन्वर्टेड टी वेव एंड वी गेट प्रोमिनेंट यू वेव प्रोमिनेंट हो जाती है, टी वेव इन्वर्ट हो जाती है. देन हाइपरकलीमिया में क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है, पीक टी वेव मिलती है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल हो जाता है, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरकलीमिया. ओके, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इज देयर, पीक टी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. हाइपोकैल्सीमिया में समझो, हाइपोकैल्सीमिया में प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया में एसटी प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, एंड अगर सीवियर हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया दैट कैन गो इनटू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. ओके, देन हाइपरकैल्सीमिया में समझो, हाइपरकैल्सीमिया में तुम्हारा क्यूटी इंटरवल विल गेट शॉर्टन, देयर विल बी शॉर्टन क्यूटी इंटरवल, शॉर्टन एसटी सेगमेंट एंड वाइडन टी वेव. हाइपोमैग्नीसिया में समझो, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, इन्वर्टेड टी वेव एंड प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल. हाइपर मैग्नीसीमिया में वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल. सो दीज आर ऑल योर different ECG changes. Now we will learn about,
Okay, labor medications, labor and delivery medications. So first of all, learn about the tocolytics. Okay, so tocolytics usually तुम्हारे प्रीटर्म लेबर को स्लो करने के लिए यूज होते हैं इन लेस देन 37 वीक्स. ठीक है. टोकोलाइटिक में एक आता है तुम्हारा निफिटिपिन. निफिटिपिन इज योर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. Then we have magnesium sulfate, we have terbutaline, and we have indomethacin. So nifedipine is calcium channel blocker. What is the action of nifedipine? Action of nifedipine is it decreases BP. Nifedipine BP decrease कर रहा है और साथ साथ uterine contractions कम कर रहा है. What will the nurse do? She will watch the BP and orthostatic hypotension को watch करना है basically. And so remember, nifedipine is basically calcium channel blocker. Action is it decreases BP and relaxes your uterine contraction. Magnesium sulfate की बात करते हैं. Magnesium sulfate का action होता है to relax the smooth muscle of the uterus. तो magnesium sulfate जब चल रहा है तो you have to keep in mind कि BUN और creatinine levels should be in check, because the side effect of magnesium sulfate toxicity is deep tendon reflex कम हो जाता है, urine output कम हो जाता है, respiratory rate कम हो जाता है. And antidote for magnesium sulfate is calcium gluconate. Then we have terbutaline. Terbutaline is basically your adrenergic agonist. What is the action of terbutaline? Activates beta 2, relaxes the uterus and causes bronchodilation. So you will watch for tachycardia, restlessness, angina and tremors because it is a beta 2 agonist. Okay, so turbulence delays arrival time. So terbutaline actually delays the arrival time of the baby because it is activating beta 2 receptors and it is causing bronchodilation. Then we have indomethacin is an NSAID that blocks the prostaglandin synthesis and suppresses the labor. These are tocolytics. ठीक है. These will relax the uterus. Now we have labor inducers. What are the labor inducers? These are your misoprostol, oxytocin. Okay. So misoprostol का basically काम है, इन दोनों का काम है stimulate the uterine contraction, induce the labor and placental delivery. Oxygen can be used to control postpartum bleeding. Okay. Then what else? See, you have to monitor the contractions. Good contractions are usually of less than 60-second duration, and you have to monitor the blood pressure as well as heart rate, and you have to watch for water intoxication in the baby, and too much drug will lead to uterine rupture and fetal demise. Okay, that's all for today's flashcards and today's video. I'll come up with the new video discussing more important high yield flashcards for you people. So thank you for watching this video.